morning all. Today we'll start your unit 4, information transfer through visual to verbal and Prezi writing. This unit includes both of this, and this is the last unit in your syllabus. Let us start. First, what is information transfer from visual to verbal? So visual to verbal is to analyze the picture in front of you in your own words. You will be given a picture in your exam and you have to analyze that picture in your own words. तो विजुअल टू वर्बल का मतलब है कि आपको कोई भी पिक्चर दिया होगा उसको डिस्क्राइब करना है, अपने अपने वर्ड्स में उसको लिखना है. तो एग्ज़ाम में आपको पिक्चर देंगे, वो आपको उसके बारे में यू हैव टू राइट एनालाइज दैट पिक्चर, आपको वो पिक्चर डिस्क्राइब करना होगा. It expands students' thinking capacity. So, why visual to verbal? What is the use of visual to verbal? What is the benefits of visual to verbal? Is it expands students' thinking capacity. तो आप अपनी thinking capacity बढ़ा सकते हो. आपको उस picture को first you have to observe that and then you have to write about that picture. What is the picture about? And then you have to give title also. तो आपको उस picture को observe करना है, उसके बारे में लिखना है, English में ही लिखना है और उसको टाइटल भी देना है. तो इट एक्सपांड्स योर थिंकिंग कैपेसिटी. इट इम्प्रूव्स राइटिंग स्किल्स. तो ये आपकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव करता है. एंड दैट इट्स लॉजिकल राइटिंग लैंग्वेज. तो इट इज़ लॉजिकल लैंग्वेज, यानी कि आप सीक्वेंस में अच्छी तरह से उसमें लिखेंगे. कुछ भी जो भी दिमाग में आएगा ऐसे नहीं लिखेंगे. अबाउट द पिक्चर यू विल राइट ओनली, यू विल बी राइटिंग अबाउट द पिक्चर ओनली. तो इट्स लॉजिकल सीक्वेंस. तो आपको जो भी लिखते हो वो लॉजिकल सीक्वेंस में कंप्लीट होना चाहिए. इट इम्प्रूव्स लैंग्वेज. ऑफ कोर्स आप अपनी लैंग्वेज इससे इम्प्रूव कर सकते हो. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होनी चाहिए. अच्छे से आपको लैंग्वेज लिखनी है. सी दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ विजुअल टू वर्बल. यहाँ पे मैंने जो भी एग्जाम्पल इस प्रेजेंटेशन में दिए हैं, दिस विल बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम. ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो एग्जाम्पल दिए वही एग्ज़ाम में आएंगे. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू नो यू अबाउट व्हाट इज़ विजुअल टू वर्बल. तो आप इससे पहचानो कि आपको कैसे लिखना है. क्या दिया गया होगा. कोई भी आपके सब्जेक्ट के लिए रिलेटेड भी हो सकता है और इंग्लिश के रिलेटेड भी हो सकता है. यानी कि कोई स्टोरी का भी दे सकते हैं या तो फिर बुक का पेज भी दे सकते हैं. उसको आपको एलिब्रेट करना है. फ्रंट पेज ऑफ द बुक. तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसे एलिब्रेट करना है. तो यहाँ पे दिस इज़ आई थिंक फनल और एक्सप्लेनेशन इज़ ऑल्सो गिवन विद दिस. तो आपको जो भी पिक्चर दिया होगा उसके बारे में आपको लिखना है. Funnel is a pipe with a wide, often conical mouth and a narrow stem. It is used to channel liquid or fine-grained substances into constraints. With a small opening. Without a funnel, spillage would occur. This is another flask. I think these are the pictures related to your chemistry subjects. You can understand it well. That is why I have given example of this from your subject. But एग्ज़ाम में यही आएंगे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. आपको जो भी एग्ज़ाम में दिया होगा आपको उसे एलाबरेट अपने आप में लिखना है. यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट एलाबोरेशन है. आपको इतना शॉर्ट नहीं लिखना है. यू हैव टू राइट अ होल पैराग्राफ ऑन दैट पिक्चर. Erlenmeyer flask hold solids or liquids that may release gases during a reaction or that are likely to splatter if stirred or heated. Next is again a flask. Florence flask has a round body with a single long neck and with either a round or a flat bottom. It can be used as a container to hold solutions of chemicals. It is designed for uniform heating and ease of swirling. It is produced in a number of different glass thickness to stand different types of use. और ऐसे कुछ भी पिक्चर भी दिया है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग पिक्चर ऐसा लिखा होगा. तो आपको दिस पिक्चर यू नो, आपको ये पता है इसलिए मैंने दिया है. एग्ज़ाम में भी यू विल बी आस्क सिंपल एंड ईजी ओनली, डोंट वरी. सो
आपको पिक्चर अकॉर्डिंग टू द पिक्चर यू हैव टू एक्सप्लेन। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है और गिवन टाइटल ऑल्सो, आपको टाइटल भी देना है। आप जो भी पिक्चर देखते हो उसका टाइटल देना है और उसके बारे में लिखना है। So this is a fox and a grab story. You must know about this story. One afternoon, a fox which was out of a walk in the jungle came across a bunch of grapes hanging. Its mouth watered at the very sight of the grapes. The fox thought to himself that if it could get the bunch of grapes, it would be just the thing to quench its thirst in the sweltering heat of the afternoon. It jumped high to reach the bunch of grapes but failed. It tried again and again, but the fox missed it each time. After several failed attempts, the fox gave up and walked away, saying that the grapes were too sour. I think you can understand the story. I don't need to explain in Gujarat, in another language. Fine, let us go further. After visual to verbal, you will be having précis writing also. Précis writing means 1/3. You must have done it in your 12th standard. The whole paragraph is given. You have to shorten that paragraph. You have to compress that paragraph. That is précis writing. So let us see what is précis writing. Précis writing is an exercise in compression. A précis is the gist of a passage expressed in as few words as possible. तो जो पूरा पैराग्राफ दिया है उसका आप छोटा करके लिखते हो, दैट इज़ précis writing. जितना भी कम हो उतना छोटा करके लिखना है. इसका मतलब है आपको पैराग्राफ पूरा पढ़ के उसका मीनिंग है उसको बहुत ही कम वर्ड्स में अपने आप के वर्ड्स में लिखना है. और यू हैव टू शॉर्टन द पैराग्राफ. आपको पैराग्राफ को 1/3 करना है. दैट इज़ précis writing. Précis is a summary. Précis writing is an exercise in comprehension. तो ये समरी है कि आप पूरा बड़ा सा पैराग्राफ का छोटा उसके समरी लिखते हो या फिर उसको छोटा करके लिखते हो. दैट इज़ précis writing. A précis is a passage expressed in as few words as possible. तो पूरा पैसेज है, आप उसे छोटे से वर्ड्स में छोटा सा लिख के आप उसको एक्सप्रेस करते हो, सब सामने वाले उसे समझ पाए ऐसा लिखते हो. A précis should give all essential points so that anyone reading it will be able to understand the idea expressed in the original passage. तो आप वो जो भी पैराग्राफ बड़ा सा पैराग्राफ उसे छोटा करते हो तो को क्या मीनिंग क्या है उसका वो चेंज नहीं होना चाहिए. वो जो भी कोई उसे पढ़ रहा है, रीडिंग, एनीवन रीडिंग इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. वो समझ पाए कि पैराग्राफ में क्या बताना चाहते हैं, पूरा होल ओरिजिनल पैराग्राफ भी समझ सके. ऐसे आपको उसको 1/3 करना है, कम करना है. Let us see some of the examples of précis. Now let us see example of précis writing. You will be given a big paragraph. You have to shorten that. जो बड़ा सा पैराग्राफ आपके एग्जाम में देंगे उसको आपको छोटा करके लिखना है. Several times in the history of the world, particular countries and cities or even small groups of people have attained a high degree of civilization. Yet none of these civilizations, important they were, have lasted, and one of the reasons why they did not last was that they were confined to a very few people. They were like little oases of civilization on desert of barbarism. Barbarism का मतलब है those who are not civilized, means cruel people. Civilization का मतलब है those who are very good people, those who follow everything, and barbarism they are very cruel people. Now it is no good being civilized if everybody around about you is barbarous, or rather it is some good but it is very risky. For the barbarians are always liable to break in on you, and with their greater numbers and rude vigor scatter your civilization to the winds. Over and over again in history, comparatively civilized people dwelling in cities have been conquered in this way by barbarians coming down from the hills and burning and killing and destroying whatever they found in the plains. Now let us see a précis of this paragraph. This is a précis writing.
You have to very shorten the paragraph. Many nations in the world possessed great culture, but it perished due to limited range. You are no more cultured if you live in a barbarian society. Barbarians, with their vulgar and cruel power, destroy civilization. Barbaric people defeated cultured people in the past many times. Okay, so this is what the Précy writing is. Let us see further examples. Summarize the given passage. We all know what we mean by a good man. The ideally good man does not drink or smoke, avoids bad language, converses in the presence of men only exactly as he would if there were ladies present, attends church regularly, and holds the correct opinions on all subjects. He has a wholesome horror of wrongdoing and realizes that it is our painful duty to castigate sin. He has a still greater horror of wrong thinking and considers it the business of the authorities to safeguard the young against those who question the wisdom of the views generally accepted by middle aged successful citizens. Apart from his professional duties at which he is assiduous, he spends much time in good works. He may encourage patriotism and military training. He may promote industry, sobriety, and virtue among wage earners and their children by seeing to it that failures in this respect receive due punishment. He may be a trustee of a university and prevent an ill-judged respect for learning from allowing the employment of professions, professors with subversive ideas. Above all, of course, his morals and the narrow sense must be irreproachable. Bertrand Russell, this passage is written by Bertrand Russell. Let us see the précis. A characteristic of a good man, the title is given, this paragraph is a characteristics of a good man, and the précis is, according to the author, an ideally good man is intensively religious and avoids bad habits such as smoking and drinking. It does not use obscene or indecent language and has a fear of wrongdoing and wrong thinking, is professionally dutiful and takes active interest in promoting virtues such as patriotism, industry, and sobriety among workers and the children. If possible, he prevents the employment of professors with subversive ideas. So this is what the précis of the whole paragraph is, characteristics of a good man. Okay, thank you. I hope you can understand what is visual to verbal and précis writing. Fine.